today's session and let's see what we have, what all things we will be covering. And already you have seen in that syllabus, but I'll be showing few more things that I want to highlight in front of you. And after completion of this course, you should be able to showcase around 2.5 years of experience in this skill set. Few things I want from your side. Okay. It should be two-way communication. There should be no blocker between me and you. There should be friendship between me and you. Okay. You should be able to talk with me any doubt that is coming inside your mind. Okay. Before going from the session, whatever doubt is coming in your mind, that should be cleared. And if that is something which I which is time taking or which I can't explain in class, I will tell you to that we'll discuss after the session. So it should be two-way communication. Okay. You have to keep on talking with me. You have to keep on discussing with me. And one important point that I want to highlight that this is not a certification course. This is a purely uh, in these sessions we'll be learning purely the things that come use in the industry. Okay. So this is totally industry focused training as per my experience around this technology. I'll be sharing all the things. I will try to share maximum things with you all. My main focus is to make you industry ready, not certification ready. Okay. I have already given you the reason for that in my demo session. That many people have bunch of Azure certification in their resume, but when we start asking question, they are not able to answer. So certification is good, but not before the point when you learn the technology. I mean, you should be able to work in the technology, right? You should not only know the theory. Okay, we are engineers. We don't have to get 95% or 98% marks in the boards. We have to solve problems. So my main focus will be around that. And during the course of session, I have already shown to you that what we will be picking up. Okay, what we will be picking up. So we will be learning Azure Data Factory, Azure Databricks, Azure SQL Server, Azure Keyword, Azure Logic App, Azure Data Lake. Deployment of pipeline using Azure DevOps will be also seeing Spark and PySpark. Okay. SQL is mandatory. This is I am expecting from your end. Okay. SQL is mandatory. Without SQL, you can't become data engineer. Okay. Python, if you know it, if you know, it will always you will always be have an edge over other candidates. Okay. You will always have edge over other candidates. Okay, so this is mandatory. Without this, we can't proceed even a single step. So you have to, what you have to do, you have to keep on reading, you have to keep on coding SQL using any online platform to get you prepared for, because when data engineering interview starts, it starts with SQL. Okay, so you have to be pretty good in SQL. Okay, so you have to keep on practicing this SQL from your end. If you are also interested to learn, please learn because this will give you always as an edge over other candidates. Okay. There are many other technologies with the help of which data engineering is done, like R, Scala. Scala was very famous technology a few years back, but now its demand has declined. We have Java. Okay. Earlier also data engineering was done in Java, but again its demand has declined. Okay. Also, this Java is not supported on this Databricks. So Java I mean, this is the platform over which we'll be mainly focusing our Spark concepts. On this on this Databricks platform, all the languages, Python, SQL, R, Scala are supported. Okay, but Java is not supported. R, Scala are supported, but
Java is not supported. Okay. Java is not supported. So Java anyway goes out of the picture. Okay. So R its demand is also not that much. Python is the thing over which if earlier the codes were written in any other languages like Scala or R, they all are migrating towards Python. The popularity of Python is so high. What is the reason behind the popularity of Python? Okay, there are many reasons around the popularity of Python. If I talk about few points, then few of the reasons are Python is easy to learn. Okay, Python is easy to learn. Python can be considered as one of the easiest languages that a person can learn. Okay, easy to easy to learn. Multi usability of Python. What do I mean by multi usability of Python? It can be used for data engineering. It can be used for data science. It can be used for data analysis. It can be used for web development. It can be used for scripting purpose. It can be used. It can be used for automation purpose. Okay. So because of its multi-usability, okay, its demand is much more than any other language that we have. Okay. So this is one of the topmost skill set right now. Okay. The things that I was writing has been deleted. Okay, no problem. So Python you need to, if you will know, you will always have an extra edge. Okay. Now I want to highlight few different paths to become data engineer. Okay, with minimum with what skill set you can grab a job. Okay, you can grab a job. Okay, so there are multiple services, multiple things that we need to learn that I highlighted here. Okay, plus Python and SQL. Okay, SQL and Python, SQL and Python. So this is the first thing. This is the first minimum skill set with the help of which a person can become Azure data engineer. He should know Azure Data Factory, he should know SQL, and he should know deployment, how we deploy the pipelines from one environment to another environment. Then, in this combination, if we add this Azure Databricks, other combinations remaining the same, okay, then this is another combination with the help of which you can get job. Okay. If in this combination we add another thing that is PySpark, okay, in the above combination, then this becomes another collection of skill set we can with the help of which you can become Azure data engineer. If we add Python in this skill set, then then also you can become Azure data engineer. This is the minimum thing. Okay. This is the minimum thing with the help of which you can become an Azure data engineer. Okay. And let me tell you, this Azure Data Factory and this Azure Databricks, these two are the most important thing. Okay, another thing are not that much difficult to learn, but these two are the more most important thing: Azure Data Factory and Azure Databricks. Okay, now as I said, deployment also. I'll be showing you how we deploy pipelines of Azure Data Factory and Databricks using Azure DevOps. Okay, so we'll be learning all these things. Now the sequence in which we'll be covering is we'll be covering this Databricks in the last. First of all, we'll be picking up this data factory. Simultaneously, we will be picking up data lake, SQL server, key vault, logic app, Azure logic app, and then in last we'll be seeing Azure Databricks, and here only we'll be learning this Spark and PySpark on Azure Databricks. Okay.
So we'll be picking up this thing in the last. This course will go around 2.5 months. Okay, 2.5 months, where I'll be showing all the things on the Azure portal. I'll be needing 3 credit cards from you. 3 credit cards from you. One credit card will be with 1 credit card you can use Azure subscription for 1 month. They'll be needing 3 credit card for you to have Azure subscription and practice with me, whatever I am telling in class. Now let's see. People also ask that what all certifications that if we are interested, then we can do for Azure Data Engineering. Okay. Then if you are interested, although I have already given my statement in the beginning regarding the certification. So if you are interested, but if you are interested towards certification, then these three are that certification. First of all, AZ 900. It gives you the fundamentals of Azure. Okay. Then we have DP 900. This is called Microsoft Azure Data Fundamental. Then we have DP 203. Okay. Data Engineering on Microsoft Azure. These three are those certifications that are that will be relevant for you. If you want me to showcase the syllabus of these certifications, then let me open that official documentation page where you will be finding all the syllabus of Azure certifications. You see, this is that place where you'll be getting all the syllabus regarding all the Azure certification syllabus. If you want to do AZ 900, you will just come here. Okay, you will just come here. Where it's called AZ 900. This one. You will just come here. You will go down, and here is that syllabus. Okay. Skills at a glance. What all things will be asked in the examination of this Azure fundamental certification? Describe cloud concept, 25 to 30%. Describe Azure architecture and services, 35 to 40%. Describe Azure management and governance, 30 to 35%. Around these three major topics, your question will be asked. And if we further divide these major topics into subtopics, then we have these things. In describe cloud concepts, okay, this is the describe cloud concept, 25 to 30%. Okay. If we expand this topic, then that expansion is here inside this, right? The first thing is describe cloud computing. Inside cloud computing, what all things will be asked? All things are here. Describe the benefits of using cloud services. Okay, so all the subtopics has been mentioned here. So all the subtopics, whatever will be asked in that examination, certificate examination will be mentioned here. Okay. Apart from this, AZ 900, we have this DP 900 and syllabus for this can be seen here. Okay. All the syllabus has been given here. If you want, you can explore. And apart from this, we have DP 203. This one. This is data engineering on Microsoft Azure. This is the certification for that. Okay. If you want, you can also do this certification. Okay. I am showing because many people have these questions with them. So I just highlighted these things at the beginning only. Now, let me come to Azure portal. Okay. And let me open the Azure portal. This is that Azure portal. Okay. You will click here. You have to click here. And there are two things, two options that you are seeing here. Start free and pay as you go. You don't have to click here. Okay. Now I am telling you how will you register in this Azure portal. Okay. Also, let me share that link with you, that link of syllabus with you, so that it will be useful to you. If you want, you can refer these syllabus.
Okay, someone has raised his hands. See this? Hi, sir. Hi, hi. I see. Sir, actually, I'm from mechanical background. I Okay, don't have knowledge about SQL and Python right now. okay. So how can we proceed? Okay, we have other trainers. If you want, you can get recorded video of that SQL or Python, whatever you want. Okay. For that, again, you can connect with admin. And what kind In of SQL, difficulties? SQL is mandatory. uh, basic SQL is mandatory or in deep like procedure and or Yes, yes. Procedure, functions, views creation, all those things are necessary. You keep on learning these things during the process of learning Azure. Okay. Without SQL, neither you can become data engineer, nor data analyst, nor data scientist. You can't go in the data side. SQL is the heart of every data domain. Are you clear? yes, sir. Yes, don't delay in learning anything. Okay. Because people think that I will learn tomorrow, I will learn tomorrow, I will learn next month, I will learn next quarter, I will learn next year. Right now I have this work, I have this work. But don't postpone. Okay, that is that is procrastination. If you will postpone, okay, that tomorrow will never come. Or if it will come, I don't know when it will come. Okay, make these things on priority if you really want to get good salary, good package in a good company. Okay, and if you really want a skill set with the help of which you can remain confident in your organization that yes, I know something. Okay, I know something new, I know something niche, so that you remain always ahead with people around you. Okay, if you will know, you will remain confident and you will always remain ahead with the people around you. People will come to you that tell me how this can be achieved. Can you please help me how I can do this, how I can learn this? Okay. And without SQL, you can't go in any data domain. Okay, SQL is mandatory. And SQL is also not that much tough. It is pretty easy. I think that it is one of the easiest thing in computer science to learn. Okay. So SQL is necessary. Anything else? Anything else coming in anyone's mind? Okay. You can parallelly keep on learning SQL. What I said, during the process of learning Azure, you have to parallelly keep on learning SQL. Okay. And if you are also interested to learn Python, then finish SQL in 1 or 1.5 months and then immediately pick up Python. Okay. In this way you can go. So I've shared the link for these all these certification details in the chat box. You can save the link. That link may come to your use at later point of time. Now you all know this is one of the most demanding technology in the market, and there is shortage of this skill set market. This I have already communicated. Okay, due to various reasons, and reasons I also gave you that it is a paid platform. Only those lucky ones who could get the chance to work in this technology could learn it. So now we have, I told you the hack. We need to use credit card to get subscription and keep on learning. Okay. Now the first question is Azure is a cloud platform. Okay. Azure is a cloud platform. Azure is a cloud platform. Now the first question that comes in everyone's mind that what is this cloud platform? Okay. What is this cloud platform? So let's talk in very simple way. Okay. If you remember, earlier we used to have
songs downloaded in our mobile phones, right? We used to have songs downloaded in our mobile phones. But now what happens? We have Wink app, right? We have Wink app, and there only songs are there, and we just access those songs from internet, and we just listen to it, right? We just listen to it. Also, you can think of YouTube. We are playing videos on YouTube, but those videos are not in our laptop. Those are at some other place. Those videos are placed at some server, okay? At some remote location that is placed. We are just accessing those things over internet, okay? Over internet. Similarly, cloud computing means. Similarly, cloud computing means. Okay, cloud computing means we are accessing the IT resources, we are accessing the IT infrastructure, the hardwares, okay, that are kept at some other place. We are just accessing that from internet. We are just accessing that from internet. Okay. Suppose there is a data lake in which we can keep data. I'll be talking about data lake, just don't worry. There is data lake in which we can keep data of any size, 1 terabyte, 2 terabyte, 3 terabyte. My laptop is not capable of storing terabyte or petabyte size of data. But if I take one data lake from Azure, okay, then data lake will provide me that, Azure will provide me that data lake, and this data lake we can access from internet. Okay, we can access from internet. We can access this data lake, we can access from internet, and after accessing we can store their data of any size. Okay, 1 terabyte, 1 petabyte, 10 petabyte, any size of data can be stored at that location. But my laptop doesn't have that capability. If I have to store 3 petabytes of data, I have to increase the hard drive of my laptop to that much size. I have not heard, I mean, someone has 3 petabyte size of hard drive in their laptop. Okay. So if that is possible, we will have to buy 3 petabyte size of hard drive and connect to my laptop, right? What we have to do, we have to invest in the infrastructure. We have to go to market and buy a hard drive. Suppose we need to install software in my system that needs 16 GB of RAM, but my laptop has only 8 GB of RAM. Okay. So what I need to do, I will go to market and buy one more 8 GB of RAM, and I will connect to my laptop. Then it will become of 16 GB. But what if we can take one virtual machine, we call it as virtual machine, means computer that is virtual, that is kept at remote, that is kept at any location, that has 16 GB of RAM. Okay, that is kept at any location that has 16 GB of RAM, and we can just access that computer from internet, and we can install software on that computer, and we can do our work. So instead of buying another 8 GB of RAM, what I'm doing, I'm just accessing a virtual machine that is kept at a remote location, and we are installing our software on that, and we are doing our work. Okay, we are doing our work. It means now we are not buying any hardware. Like, I'm not buying 8 GB of RAM to make total 16 GB of RAM in my laptop, or I'm not buying any hard drive having 3 petabyte of size. Okay, I'm not doing all these kind of things. I'm just taking the resources from Azure, and I'm just accessing that from internet, and I'm using that. Okay, that is called nothing but cloud computing. Okay, we are accessing the infrastructure, the IT resources from internet. Okay, these things will keep on making sense when I will do the things. Okay, these are some of the theoretical aspect that I want to highlight in front of you before moving ahead. So let's now the next question that comes is, okay, so I said that Azure is a cloud platform. I just explained to you what is the meaning of this cloud computing. There are many kinds of cloud platforms available in the market. Few of the famous cloud platforms are Azure, okay, Azure, AWS, GCP, Google Cloud Platform. There are others as well, like for Oracle has also cloud platform, and many other companies also has cloud platform. Now the next question, we have to learn Azure. Okay, so the next question now that comes to our mind
is how can we access Azure? Okay, how can we access Azure? Okay, how can we access Azure? So we needed to register in Azure platform. Okay, we need to register in Azure platform to access Azure. Let me show you. This is that page. You just have to search Azure portal in the Google. You have to just search Azure portal in Google. When this page will come, you just click it and open it. Once it opens up, you have two things: pay as you go and start free. You click on start free. Okay, you don't have to pay as you go. In pay as you go, you will be charged. Okay, click on start free. And for me, uh, I am already registered. That's why directly my login page is coming. Okay. For you, you will have to give your email ID here. Okay. You will have to register here. I mean, when you will give your email ID, then it will ask you details. You have to give those details, and it will ask for your credit card number and phone number, address, all those things. You just have to put that and you have to register in the Azure portal. Once you have registered, you will come on this page. Okay, let me just log in into this. Okay, I already have an account. Wait. Okay, once you log in the first time after giving up all your details, you will land up in this page. Okay, you will land up in this page. Okay, these things will not be visible to you. Okay, right now I have subscription, that's why it is visible to me. These things will not be visible to you. Okay, forget this. Okay, these things will not be there in your subscription. Forget this, that this is present here. These things will be visible to you in your subscription. Okay, few things might not be visible because and whatever things I'm accessing frequently, those things comes up here. Okay. Now what you have to do, this is the first look of Azure portal. This is how it looks. Okay, this is how it looks. Now what you have to do, you have to click on resource groups. Okay, if this is visible to you at this place, that is good. If it is not visible, you just have to come here and you have to search for resource groups and you have to click here. Okay, let me click on this one. And you see, I will land up here in this resource group page. Okay, I will land up here in this resource group page. Once I land up here in this resource group page, again, these things will not be visible to you. Since I'm teaching to many people, that's why I keep on using, that's why I've created many resource groups here. These things will not be visible to you. It will be blank for you. Okay. Don't worry. It will be blank for you. Don't worry. Here, these many subscriptions are here for me because I keep on creating resource group for teaching purpose. Okay. Now what you have to do, you have to just click on this create. Okay. When this page opens up, only this thing will not be there. Everything will remain. You have to click on create and here you need to give the subscription name. Okay. I am using a paid subscription. When you will log in using credit card, you will be using free subscription. Okay. I am using paid subscription. That's why it is coming as Azure subscription one. But since you will be using free subscription here, something like free subscription, something written like free subscription will be coming up here. You have to choose that. I will be choosing Azure subscription because I have paid subscription. Okay. So you have to choose that. After that, in drop down, that will automatically come. Okay. You have to choose that. After that, we have something called resource group. Okay. We have something called resource group here. The first thing after registering in Azure portal, okay, after registering in
Azure portal, the first thing that we do is we create a resource group. Okay, I'll tell you what is this resource group. After registering in this Azure portal, the first thing we do is we create resource group. Okay. So here we are creating a resource group. Okay. Here it is writing, right? Create a resource group. I'll tell you what is a resource group. Let me first of all create the resource group. Okay. I'm creating a resource group. Okay. With name forum D4. Okay. I'm creating a resource group with this name. Okay. You can also create a resource group with any name you want. Okay. And in reason, whatever is coming by default, leave it as it is. Okay, leave it as it is. Now we will just click on next. Next, all is good. Okay, you see something is coming validation pass. Validation pass means whatever details we have given is good. And then we have to click on this create. Okay. Here you see one message is coming, resource group created. Okay, it means this resource group has been created. Let me close this and let's see whether it is coming or not. You see, this resource group started coming here, forum D4, which I created just now. Okay. Now what I will do, I will just click here. Okay. You see, my resource group has been created. Okay. This is my resource group. Let me hide this. You see, this is my resource group. This is the first UI, how a resource group looks like. Okay. This is the first UI, how a resource group looks like. Do anyone has any question till now? If yes, this they can ask. Okay, you can ask anything, whatever is coming in your mind. Anyone has anything? Like same thing, like what is this resource group and like Hmm, is it I will tell related to you. one-on-one organization? Sorry, come again. What you said? If I'm working in the organization, it would be Uh-huh. already there. Uh, Uh-huh. uh, I will. it's I already will tell. created. Yes, it's already created. I will tell you. I will tell you. Just give me some time. Okay. Till here, everything is clear, right? So this we created resource group. Okay. Inside this resource group. Okay. Inside resource group. In short, okay, in short, we call resource group as RG as well. Okay, in short, we call resource group as RG as well. Okay, so let me write in short form only. Inside RG, we create resources. Okay, inside RG, we create resources. What do I mean by resources? Resources means nothing but these things only that I just discussed in front of you. Azure Data Factory, Azure Databricks, Azure SQL Database. Okay, these are nothing but the resources. Let me copy few of the names. Okay, and let me bring in. Okay, inside RG we create resources, and what are the resources? These are the resources. These are the resources. Okay, these are those resources. Okay, we also call services to these resources. Okay, we also call services to these resources. Okay, so what I said, we created RG, and I am saying that inside RG we create resources. So if I want to create Azure Data Factory is a kind of resource. So where it will be created? It will be created inside RG. Okay, inside RG, inside resource group. So let me come to the portal again. Okay, now what I'm going to do, I'm going to provision Azure Data Factory. Okay, what I'm going to do, I'm going to provision Azure Data Factory. Okay, provision. Okay, provision Azure Data Factory. Azure Data Factory. Keep noticing on the words that I'm using. I'm saying that I'm going to provision Azure Data Factory. What is the meaning of this provision? I will just tell you. Okay. You see, this is a resource group, and here it is showing no resources. Here it is showing create resources. Okay, create resources. So I'll just click on this. I'll just click on this, and here there is something called marketplace. Okay, here only all the services are
are visible. Whatever we want, we can provision from here. Provision means I am taking that resource on rent from Azure. Okay. Provision means I am taking on rent. I am taking that resource on rent from Azure. Okay. So if I need to provision Azure Data Factory, okay, this is the marketplace. Here you will get all the services or all the resources. Okay. So what I'm telling, if I needed to provision Azure Data Factory, I will just search here. Okay. You see here it is coming Azure Data Factory. Let me click here. Okay. You see something is coming here. This is Data Factory. You see chimney like symbol is there, right? This is symbol of factory. So let me click on this create. Okay. Create option. I'm provisioning Data Factory right now. So when you will click on this create data factory, here again the subscription will be coming. For me, my subscription is coming. For you, free subscription will be coming here. In resource group, we need to choose the resource group. So my resource group is forum D4. Just now I created in front of you. So I'll be choosing that. And here we need to give the name of data factory. Okay. The name of data factory. So let's suppose I'm giving ADF forum D4. This is the name which I want to give to this data factory. So that name I give. ADF means Azure Data Factory. To this Azure Data Factory, okay, we are provisioning Azure Data Factory, right? So to this Azure Data Factory, in short, we also call it as ADF, Azure Data Factory. Okay, Azure Data Factory. So I have given a name here to this data factory. Reason and version. Reason, leave it right now. I will tell you at later point of time. Version. Okay, version is V2. Okay, earlier V1 version used to come, but now that has been discarded. So that's why by default now V2 only comes. So you have to keep on. You have to. I mean, this will come by default, so you have to choose that only. Okay. Then I have to click next. I will have to leave everything as it is. Okay. And after this running final validation is coming. What is happening right now? It is checking whatever details we have provided is correct or not. So that validation it does. Okay. So that validation is complete. Now I will just click on this create option. Okay. You see here it is something is coming. Initial deployment, submitting deployment. Okay. I will tell you what is happening here. So we have clicked on this create option here. Sir, am I audible? Yes, Sir, yes. Who आवाज is आ रही this? Yes, yes. है? Clear Who आवाज is आ रही है this? सर? Yes, yes, yes. Clear, clear. सर ये जो आप स्क्रीन पे दिखा रहे हो ना ये बहुत ब्राइट हो रहा है एक्चुअली में, ये बहुत वाइट वाइट हो रहा है मेरे लिए, और थोड़ा What? ये जो लेटर्स भी है ना वो थोड़े छोटे दिख रहे हैं. ऐसा? हाँ, लाइक ये But जो भी लिखा है ना इस पे इसको थोड़ा बड़ा कर दो सर, और ये जो बहुत बहुत ब्राइट है स्क्रीन थोड़ा कम ब्राइट कर सकते हो क्या? अच्छा क्योंकि ऐसा हो रहा है क्या? मैंने अपनी स्क्रीन को कम ब्राइट किया लेकिन तब भी वही हाल है. Okay. And what about others? To others, is it looking good or they are also facing the issue? It's fine. It's looking fine actually. It is good, right? Yes, yes. Yes, sir. Yeah, it's good. सर Yes. थोड़ा जूम कर दीजिए. हाँ जूम भी Okay. चाहिए सर, वो छोटे दिख रहे हैं लेटर्स. हाँ जूम तो कर दिया है. जूम तो कर दिया है. और हो सकता है क्या सर? और कर दो. इतना? हाँ आप सही इतना? लग रहा है. हाँ आप ओके सही सर. लग रहा है. Okay. Brightness? ब्राइटनेस भी ठीक है सर, अभी दिख रहा है ना लेटर जूम कर दिया आपने. Okay, okay. Okay. आप हिंदी में बोल रहे तो how many of you are from South? Is anyone from South as well? Or you want me to continue the session in Hindi only? In Hindi, many people have, I mean, Better we can keep it in English. okay, you want to keep in English. Okay. Some people say that in Hindi they grasp much better. The grasping rate is much better. सर हिंदी प्रॉब्लम में क्या मेरा होगा तो कि बहुत. इंटरव्यू तो इंग्लिश में होगा ना, तो हिंदी से कुछ फायदा नहीं होगा. हाँ, क्योंकि exactly. इंटरव्यू तो इंग्लिश में ही Right, होगा. right. तो Exactly. मिक्सअप भी चलेगा सर.
क्या? सर समझने के लिए हिंदी चाहिए, मिक्स लैंग्वेज लेकिन भी चल बोल- सकती है। अच्छा, मिक्स भी चलेगा। एक लैंग्वेज बता दोगे तो, इफ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी, तो मैं हिंदी में भी चल सकता हूँ। सर हिंदी में जल्दी निकाल सकते हो, मेरे को पता है। 70% हिंदी, 30% इंग्लिश। अच्छा, ऐसा? व्हाट अबाउट अदर्स? एक बार वोट लेने दो, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। चलेगा सर, नो प्रॉब्लम। एवरीवन, हिंदी से प्रॉब्लम है? सबसे पहले ये जानते हैं पहले, हिंदी से प्रॉब्लम है किसी को? जस्ट बी फ्रैंक, बिकॉज on this only further sessions will depend. But interview happens in English. That is a reality. उसके लिए That's पहले why it will समझना be चाहिए better ना सर। English only, because even if we understand in Hindi, but if we are going for interview in English, na, again there will be a problem. So better if you keep in English, so it will be good for everyone, for interview purpose also. Okay, okay. तो बेस्ट ये रहेगा कि हम मिक्स ही रखें तो ज्यादा बेटर, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं कि इंग्लिश में समझ नहीं आते, कुछ कॉन्सेप्ट्स क्या है कि हिंदी में अच्छा, समझे तो बेटर है, और अच्छा, अच्छा। अकॉर्डिंगली हिंदी में समझ के हम वी कैन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, सो दैट वुड बी बेटर। हाँ, सर ये दोनों में कर दो सर, रविंदर के लिए थोड़ा इंग्लिश में बोल देना। रविंदर, यस सर। चलेगा क्या? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भी हिंदी बहुत अच्छी से आती है, लेकिन पर्पस ये है कि इंटरव्यू कहीं भी जाएंगे ना तो इंग्लिश में ही पूछेंगे, तो बेटर यही रहेगा, लेकिन हिंदी में भी चलेगा, दोनों में मुझे कुछ प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। यहाँ हिंदी देखो इसलिए बोलना बोला गया है क्योंकि ताकि एक्चुअली समझ सके बस। एक्चुअली यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने के लिए है, आपको बोलना इंटरव्यू में अपने हिसाब से ही पड़ेगा, हाँ, वो तो है। तो ऐसा भी इंग्लिश होता तो है अपने हिसाब से कि बोलना पड़ेगा। लोग जब समझ जाते हैं तो फिर वो ट्रांसलेट कर लेते हैं। हाँ वही है कॉन्सेप्ट, वही है बेसिकली कि हमें बोलना इंटरव्यू में आंसर तो हमें खुद की ओन लैंग्वेज में ही देना पड़ेगा, ओन इंग्लिश में देना पड़ेगा। अगर रविंदर तुमको हिंदी में समझ में नहीं आया तो सर को बोल देना, वो इंग्लिश में समझा देंगे। नहीं, मुझे हिंदी बहुत अच्छे से आती है, हिंदी मुझे बहुत अच्छा, अच्छे से, मैं नॉट कितने लोग प्रॉब्लम साउथ क्या से होता है हैं? ना, कितने लोग साउथ? प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग सीख रहे हैं बचपन से इंग्लिश, लेकिन फिर भी हम परफेक्ट नहीं है 100%, तो थोड़ा बहुत जब कोई भी सीखेंगे ना, परफेक्ट नहीं है यार, कोई भी परफेक्ट नहीं है इंग्लिश में। इसलिए तो अगर हम सीखेंगे धीरे धीरे ना तो और बेटर होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अच्छा, आप लोग साउथ, आप लोग बेटर मिक्स वी साउथ। कैन डू, नॉट नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, मिक्स मिक्स। ओके, ठीक है। साउथ से कितने लोग हैं ये बता दो एक बार खाली, ताकि हिंदी यूज करो तो पता तो रहे कितने लोग साउथ से हैं। कोई नहीं है साउथ से? आई एम है फ्रॉम ना ये बेंगलुरु। गोपाल शेट्टी। ओके, गोपाल शेट्टी दिनेश इज फ्रॉम उड़ीसा। गोपाल, यू आर फ्रॉम उड़ीसा, राइट? Yes, Arun, but job location is Hyderabad. ना ना, हिंदी कहने का मतलब हिंदी आता है? हाँ, हिंदी आता है, समझ सकते हैं। अच्छा से? वी आर हाँ, इंडियन, अच्छे से। सबको इंग्लिश आता है, हिंदी आता ठीक है, है। ठीक है। तो इंग्लिश में चलेंगे अब हम लोग हिंदी प्लस इंग्लिश। ठीक है, ऑल गुड? परफेक्ट। ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ओके, इंग्लिश यूज करेंगे हम लोग। अरुण इंग्लिश यूज करते हैं, कभी भी हमको डिफिकल्ट लगेगा तो आप हिंदी में हमको बता सकते नहीं नहीं, इंग्लिश बोला मैंने, इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश, Yeah. HINGLISH। इज Okay, इट गुड फॉर यू? गुड फॉर यू? Yeah. हैं। फाइन। ओके, ग्रेट। तो यहाँ पे अभी जो मैं कर रहा था, मैंने, मेरी फोटो ठीक से आ रही है ना आप लोग? हाँ, ठीक। तो यहाँ पे यस मैंने सर। क्या क्या किया, मैंने एक रिसोर्स क्रिएट किया। ओके, और वो रिसोर्स का नाम है Azure Data Factory। ओके, मैंने जब क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक किया था तो क्या हुआ, मैंने Azure को रिक्वेस्ट किया कि Azure मुझे एक Azure Data Factory दो। तो Azure क्या किया, उस रिक्वेस्ट को, मेरे रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए वो Azure Data Factory तैयार करने लगा, बेस्ड ऑन वो इन्फॉर्मेशन जो हमने फुलफिल किया था कि मेरा Azure Data Factory का नाम ADF फॉरम DE4 होना चाहिए, वर्जन V2 होना चाहिए, ऑल दोस थिंग्स बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन। Azure जो है उस रिसोर्स को तैयार किया, रेडी किया, और रेडी करके मुझे दे दिया कि लो, तैयार कर दिया, तुम यूज करो। ठीक है, तो वही यहाँ पे दे रहा है, योर डिप्लॉयमेंट इज कंप्लीट। इट मींस कि Azure ने वो Azure Data Factory को तैयार करके मुझे दे दिया है कि अब लो, Azure Data Factory बन गया, मेरा Azure Data Factory बन चुका है। अब मैं एक बार गो टू रिसोर्स पे जैसे ही क्लिक करूंगा, ये देखो, ये Azure Data Factory का फर्स्ट पेज। ओके, दिस इज हाउ इट लुक्स। थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं, फिर मैक्सिमाइज कर देंगे। दिस इज द फर्स्ट लुक ऑफ Azure Data Factory, दिस इज हाउ इट लुक्स। ओके, ऐसा दिखता है ये, ऐसा दिखेगा। ओके, अब देखो, here we have many information. Okay, here we have many information on this page. Okay,
like if you notice here we are seeing resource group फॉरम D4, मतलब ये जो डेटा फैक्ट्री है किस रिसोर्स ग्रुप के अंदर है? फॉरम D4 के अंदर है, इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर है। क्या लोकेशन है? ईस्ट यूएस। अब मैं बताता हूँ इस लोकेशन का मतलब क्या है। ठीक है, लोकेशन का मतलब मैंने एजोर डेटा फैक्ट्री प्रोविजन किया, मैंने एजोर को बोला था कि मुझे एक एजोर डेटा फैक्ट्री दो, उसने मुझे बना के दिया। ओके, लेकिन ये एजोर डेटा फैक्ट्री कहीं तो इंस्टॉल होगा, किसी तो कंप्यूटर पे इंस्टॉल होगा, तो वो कंप्यूटर कहाँ पे रखा हुआ है? कोई डेटा सेंटर होगा, राइट, जहां पे ये मेरा एजोर डेटा फैक्ट्री इंस्टॉल होगा किसी मशीन के ऊपर। वो मशीन कहाँ पे है? वो मशीन है ईस्ट यूएस में रखा हुआ। ओके, वो मशीन है ईस्ट यूएस में रखा हुआ। ओके, इस लोकेशन का मतलब ये है, ये मशीन जो है ईस्ट यूएस में रखा हुआ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक सॉफ्टवेयर है, सपोज करो एजोर डेटा फैक्ट्री, और इसको मैं इंस्टॉल करना चाह रहा था, बट चूंकि हम क्लाउड पे एजोर डेटा फैक्ट्री को यूज कर रहे हैं, तो ये कहीं और रिमोट लोकेशन पे किसी मशीन, मशीन जब मैं बोल रहा हूँ मतलब कंप्यूटर, किसी मशीन पे इंस्टॉल होगा और उसको हम इंटरनेट से एक्सेस करेंगे। तो ये जो डेटा फैक्ट्री वहां पे ईस्ट वेस्ट में इंस्टॉल हो चुका है किसी कंप्यूटर के ऊपर, और अब हम उसको यहाँ पे मैं अपने सिस्टम में, मैं अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल यूज कर रहा हूँ इसको। ठीक है, मैं अपने कंप्यूटर पे इसको यूज कर रहा हूँ। अब जो है, जो सबसे पहला चीज जो मैं एक और दिखाना चाहता हूँ, मैं फिर से एक बार होम पे जाता हूँ, मैं फिर से एक बार रिसोर्स ग्रुप पे जाता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे फॉरम D4 पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये डेटा फैक्ट्री दिखता है मुझे यहाँ पे। अब पहले क्या था, ये फॉरम D4 के अंदर ये ब्लैंक था, खाली था, देयर वाज नथिंग। अब फॉरम D4 के अंदर जो है एक डेटा फैक्ट्री दिख रहा है यहाँ पे मुझे, राइट। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये डेटा फैक्ट्री दिख रहा है, यहाँ पे लोकेशन भी दिख रहा है, ये ईस्ट यूएस पे, ये डेटा फैक्ट्री ईस्ट यूएस लोकेशन पे प्रोविजन हुआ है। एक बार मैं क्लिक करता हूँ इसको, और ये जो लॉन्च स्टूडियो है, ठीक है, ये जो लॉन्च स्टूडियो है, मुझे मुझे इस पे क्लिक करना है। ये सारे ऑप्शन को ध्यान नहीं देना है, बस ये लॉन्च स्टूडियो पे क्लिक करना है। मैं आपको फर्स्ट यूआई दिखाना चाहता हूँ डेटा फैक्ट्री का, ये दिखता कैसा है। ठीक है, ओके, तो ये जो है फर्स्ट यूआई है डेटा फैक्ट्री का, ये जो है पहला पेज है डेटा फैक्ट्री का, ऐसा दिखता है ये डेटा फैक्ट्री। ओके, ऐसा दिखता है। अब यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये 5 ऑप्शन है। ओके, 5 ऑप्शन का कुछ कुछ मतलब है, लेकिन जो सबसे पहला ऑप्शन मैं आप लोगों के सामने अभी हाईलाइट करना चाहता हूँ, बाकी नेक्स्ट सेशन में हम ये सारे ऑप्शन की तरफ पढ़ेंगे। अभी जो है सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन ये ऑथर है, ये पेंसिल आइकन जहाँ पे है, ठीक है, पेंसिल जहाँ बना हुआ है, ये ऑथर, इस पे क्लिक करेंगे। ये देखो, यही वो चीज है जहां पे पाइपलाइन बनता है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं पे वो जो है पाइपलाइन बनता है। ओके, डेटा पाइपलाइंस बनते हैं। डेटा इंजीनियरिंग के अंदर हम जो डेटा पाइपलाइंस बनाते हैं, डेटा को ऑटोमेटिक प्रोसेस करने के लिए, वो पाइपलाइंस के क्रिएशन हम इस जगह पे करते हैं। ओके, अभी मैं इन सब चीजों में डिटेल में नहीं जाऊंगा, आज मैं प्रोविजन करा रहा हूँ कुछ कुछ चीजें, सेटअप तैयार कर रहा हूँ ताकि जिसपे हम काम करेंगे। ओके, तो ये पहला यूआई है मेरा। ठीक है, मैं फिर से होम पेज पे जाऊंगा, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, मैं फिर से होम पेज पे जाऊंगा। ओके, तो इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर मैंने जो डेटा फैक्ट्री को प्रोविजन कर लिया। ओके, अब मैं एक दूसरे रिसोर्स को प्रोविजन करूंगा जिसको हम कह रहे हैं एजोर डेटा लेक। ओके, प्रोविजन 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 एजोर डेटा लेक। ओके, ये क्या रिसोर्स है? ये एक रिसोर्स है एजोर डेटा फैक्ट्री, एजोर डेटा लेक एक रिसोर्स है। हम रिसोर्स बोले या सर्विस बोले, अगर आप सिंपल टर्म में समझना चाहो तो आप एक सॉफ्टवेयर समझ सकते हो। हर एक रिसोर्स एक अलग अलग सॉफ्टवेयर है, हर एक रिसोर्स अलग अलग सॉफ्टवेयर है, आप इस तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, अगर मैं एक लेमन टर्म में बात करूं तो। अब बात आती है एजोर डेटा लेक की। ओके, प्रोविजन एजोर डेटा लेक। डेटा लेक नाम से कोई रिसोर्स या सर्विस नहीं होता एक्चुअली, स्टोरेज अकाउंट नेम से रिसोर्स है। ओके, एज्योर के ऊपर, डेटा लेक नाम से नहीं है। ठीक है, अब स्टोरेज अकाउंट के अंदर जो है दो चीजें होती हैं, एज्योर डेटा लेक जेन 2 और एज्योर डेटा लेक एज्योर ब्लॉब स्टोरेज। ओके, एज्योर ब्लॉब स्टोरेज,
एज्योर ब्लॉब स्टोरेज, ओके। और एज्योर डेटा लेक जेन 2 को शॉर्ट में हम लोग जो है ADLS जेन 2 भी बोलते हैं, ओके। ADLS जेन 2 भी बोलते हैं। तो एज्योर डेटा फैक्ट्री तो कर लिया प्रोविजन, अब करेंगे हम स्टोरेज अकाउंट प्रोविजन, ओके। ये स्टोरेज अकाउंट से दो तरीके के डेटा लेक प्रोविजन होते हैं, एज्योर डेटा लेक जेन 2 या फिर शॉर्ट में हम उसको ADLS जेन 2 बोलेंगे, और ADL एज्योर ब्लॉब स्टोरेज। ये दो तरीके के डेटा लेक जो है प्रोविजन होते हैं स्टोरेज अकाउंट से, ओके। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। हम फिर से इसको मिनिमाइज करेंगे, हम इसी रिसोर्स ग्रुप के अंदर जो है सारी चीजें लेके आएंगे, इसी रिसोर्स ग्रुप के अंदर हम सारी ट्रेनिंग करेंगे, ओके। तो हमें जो है अब डेटा लेक एक लाना है। डेटा लेक कैसे आएगा, मैंने क्या बोला, डेटा लेक वर्ड से कुछ नहीं है, स्टोरेज अकाउंट हमको स्टोरेज अकाउंट नाम से है। तो स्टोरेज अकाउंट हम यहाँ पे क्रिएट पे फिर से आएंगे, अपने रिसोर्स ग्रुप के अंदर क्रिएट पे क्लिक करेंगे और फिर से ये मार्केट प्लेस खुलेगा। यहाँ पे सारा सॉफ्टवेयर रखा हुआ है, सारे रिसोर्सेज रखे हुए हैं, जो चाहिए वो सर्च करो और उसको प्रोविजन करके ले लो एजोर से, ठीक है। हम बोलेंगे एजोर को कि मुझे स्टोरेज अकाउंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सर्च करूंगा और सर्च करूंगा, देखो यहाँ पे कुछ जो स्टोरेज अकाउंट नेम से आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, क्रिएट पे क्लिक करूंगा, स्टोरेज अकाउंट, क्रिएट स्टोरेज अकाउंट पे क्लिक किया और यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से कुछ डिटेल्स भरने के लिए आ गया, ठीक है। तो हम कुछ डिटेल्स भरेंगे और उसको सबमिट करेंगे। तो हम वो सारी डिटेल्स एज्योर को दे रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट को दे रहे हैं कि मुझे एक स्टोरेज अकाउंट चाहिए, चलो तैयार करके दो मुझे, ठीक है। तो एज्योर फिर तैयार करके वो मुझे देगा मेरे यूज के लिए, ओके। तो ये देखो, अब मैं एक स्टोरेज अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है। सब्सक्रिप्शन मैंने अपना चूज कर लिया, आपके में फ्री सब्सक्रिप्शन आएगा, आपको वो चूज करना है। मेरा पेड है इसलिए मेरा ये पेड सब्सक्रिप्शन का नाम आ रहा है। यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप चूज करना है। हम फॉरम डी के 4 के ऊपर काम कर रहे हैं, ये वाला रिसोर्स ग्रुप चूज करेंगे। लिस्ट डाउन में सारा रिसोर्स ग्रुप आता है, हमको वही चूज करना है जिसमें हम कर रहे हैं। क्योंकि आपका तो नया होगा तो आपका एक ही आएगा, मेरा क्योंकि मैं बहुत सारे रिसोर्स ग्रुप्स यूज करता हूँ तो मेरे बहुत सारे आ रहे हैं। यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट नेम देना है, ओके। यहाँ पे स्टोरेज अकाउंट नेम देना है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं एक नेम दे रहा हूँ ADLS, ओके। मैं एक नेम दे रहा हूँ, मैं ऐसे लिख रहा हूँ स्टोरेज अकाउंट फॉरम DE4, मैं ये नेम दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो फिर से रीजन यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए आ गया, देखो यहाँ पे मल्टीपल रीजन आते हैं, ओके। आप किसी भी रीजन में सिलेक्ट कर सकते हो, मैं बाय डिफॉल्ट ईस्ट वे से मैं इसी को रहने दे रहा हूँ। इसका मतलब ये जो आपका स्टोरेज अकाउंट प्रोविजन हो रहा है, ये प्रोविजन हो रहा है ईस्ट वे से, मतलब ईस्ट वे में कोई कंप्यूटर रखा हुआ है, कोई डेटा सेंटर है, वहां पे एक्चुअली मेरा ये स्टोरेज अकाउंट इंस्टॉल होगा, सब कुछ होगा, और हम इसको जो है इंटरनेट के थ्रू URL से एक्सेस करेंगे। इसी को हम क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं, राइट। स्टार्टिंग में मैंने ये एक्सप्लेन किया आपको कि IT रिसोर्सेज कहीं और रखा हुआ है, लेकिन हम जो है इंटरनेट से यूज कर ले रहे हैं उसको, हमारा लोकल सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रह गया। चाहे मैं विंडोज 10 यूज करूँ, विंडोज 11 यूज करूँ, विंडोज 7 यूज करूँ, मैं किसी भी कंप्यूटर से जो है वो स्टोरेज अकाउंट जो वहां पे इंस्टॉल्ड है, बस इंटरनेट के थ्रू मैं उसको जो है यूज कर सकता हूँ। इंटरनेट के थ्रू, URL के थ्रू उसको मैं अपने लैपटॉप में एक्सेस करूंगा और मैं उसको यूज कर लूंगा, ओके। तो ये रीजन मैंने चूज कर लिया। अब इसको जो है स्टैंडर्ड इसी तरीके से रहने देते हैं। इसको जो है मैं क्या करूंगा, LRS कर लूंगा। आप लोग भी ये कर लेना, ठीक है। इसका मतलब मैं बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। बहुत सारे 4 ऑप्शन आते हैं, LRS हम चूज करेंगे, ठीक है। अरुण, हाँ एक डाउट रिगार्डिंग हाँ रीजन। हम हाँ इंडिया में ही ना, इसलिए हम रीजन साउथ इंडिया रखने से कुछ परफॉर्मेंस ऐसे बढ़ सकता है, ऐसे कुछ है हाँ, क्या? परफॉर्मेंस बढ़ेगा, जितना नजदीक होगा वो रीजन उतना ज्यादा परफॉर्मेंट होगा। ओके, तो हम साउथ इंडिया और ईस्ट इंडिया ऐसे कुछ ले सकते हैं, हाँ, ले सकते हैं, मैं बाय डिफॉल्ट रहने दे रहा हूँ, ठीक है। ओके। हम ले सकते हैं। इन जनरली रियल टाइम कैसे करते हैं, मतलब नियरेस्ट डेटा सेंटर जो है वही करते हैं ना जनरली? हाँ हाँ हाँ, वही करते हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे हम इंडिया से काम करते हैं, हम जनरली वेस्टर्न क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं, राइट। US का या फिर UK का, हाँ, है ना। वही। तो यस। वो जो हम यूज करते हैं उनके में US या फिर UK पे ही प्रोविजन रहता है, हम इंडिया पे नहीं प्रोविजन करते हैं, ठीक है। ओके, क्योंकि जनरली हमारे क्लाइंट्स क्या होते हैं, US के होते हैं, UK के होते हैं। और उनका बिजनेस। गवर्नमेंट की ये पॉलिसी भी होती है, अगर डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज जो होती है, DPR पॉलिसीज की,
आपका डेटा जो है एक कंट्री का बाउंड्री नहीं क्रॉस कर सकता। अगर किसी कंट्री के पर्सनल सिटीजन्स का डेटा है उस डेटा के ऊपर, तो गवर्नमेंट पॉलिसी जो है उस डेटा को अपनी बाउंड्री को क्रॉस करने नहीं देती है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? यस। तो अगर हम यूएस के क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे यूएस के कस्टमर्स का डेटा है, तो वो नहीं चाहेगा कि उसका डेटा जो है इंडिया के डेटा सेंटर में स्टोर हो। समझ रहे हो? इसलिए वो ईस्ट वेस्ट ही करके रखते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। Yes. अब मान लो इंडियन गवर्नमेंट का डेटा होगा और हम डेटा लेके एक बनाएंगे जिसमें हमको इंडियन गवर्नमेंट का डेटा रखना है, तो क्या इंडियन गवर्नमेंट कभी चाहेगी कि मेरा डेटा जो है ईस्ट यूएस के डेटा सेंटर में स्टोर हो? समझ रहे हो बात को? हाँ। वो चाहेगी अरुण, कि at the end it is a cloud, right? at the end it is cloud, but remember that cloud doesn't means cloud. Cloud simply means you are accessing the resources over internet. Cloud again comes to the physical infrastructure, जो मशीन्स पे डेटा स्टोर होगा। ओके, Okay. तो वो मशीन तो ईस्ट यूएस में रखा हुआ है, राइट? तो इंडियन गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि मेरा डेटा यूएस के डेटा सेंटर पे जाए। मेरा डेटा मेरे कंट्री के बाउंड्री में ही रहना चाहिए। समझ रहे हो बात? हाँ हाँ। ओके, now we will click on this next, and one thing we will be doing, there is something called enable hierarchical namespace. Okay, we have to click on this option. Okay, I will tell you why we need to click on this option. Okay, if there are two things, okay, there are two things. If we enable hierarchical namespace, okay, I told you right कि स्टोरेज अकाउंट से दो चीजें प्रोविजन होती हैं, कि जो डेटा लेक जेन 2 और एक एजोर ब्लॉब स्टोरेज। ओके, अब मैं हायरार्किकल नेमस्पेस को इनेबल करता हूं तो मेरा एजोर डेटा लेक जेन 2 प्रोविजन होता है। अगर मैं इनेबल हायरार्किकल नेमस्पेस ऑप्शन को डिसेबल करता हूं, ओके, अगर मैं इसको डिसेबल करता हूं, अगर मैं इसको डिसेबल करता हूं तो मेरा जो है एज्योर ब्लॉब स्टोरेज प्रोविजन होता है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं आपको। देखो, स्टोरेज अकाउंट से दो तरीके के डेटा लेक प्रोविजन होते हैं, एक होता है एज्योर डेटा लेक जेन 2 और एक होता है एज्योर ब्लॉब स्टोरेज। ये जेन 2 जो है ये मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ डेटा लेक है, मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ डेटा लेक। मैं बताऊंगा व्हाई इट इज मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ डेटा लेक एट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। अभी बस इतना जानना है, मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ डेटा लेक। और ये जो ब्लॉब स्टोरेज है, ये जो ब्लॉब स्टोरेज है, ये इससे इससे नीचे है, एडीएलएस जेन 2 से नीचे है। ओके, दिस एडीएलएस जेन 2 इज द मोस्ट एडवांस काइंड ऑफ डेटा लेक। ओके, तो मैंने जो है इनेबल हायरार्किकल स्पेस अगर इनेबल किया तो एडीएलएस जेन 2 प्रोविजन होगा, अगर इनेबल हायरार्किकल स्पेस को डिसेबल किया तो एज्योर ब्लॉब स्टोरेज प्रोविजन होगा। मैं यहाँ पे इसको इनेबल कर रहा हूँ, तो क्या प्रोविजन होगा? एडीएलएस जेन 2 प्रोविजन होगा। ओके, अब मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। ओके, और सब चीज मैं सेम छोड़ता हूँ, मैं कोई भी I have चेंज। one question. हाँ हाँ, yes. So both we cannot provision at the same time, No, no, you like can't. single plus You V2 can't. block. You can't. You can't. Okay. Okay, sure. Yes. तो ये जो है, फिर से देखो क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा, मैंने जो भी अभी डिटेल्स दी वो सारा डिटेल्स माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के पास जाएगा, एज्योर पे चेक करेगा सारा डिटेल्स सही है, फिर वो मुझे एक डेटा लेक बना के देगा। ठीक है, वो मुझे एक डेटा लेक बना के देगा। तो मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, ये लिख रहा है इनिशियलाइजिंग डिप्लॉयमेंट। इट मींस इनिशियलाइजिंग डिप्लॉयमेंट मींस एज्योर जो है अब एक डेटा लेक बना के मुझे देने की तैयारी कर रहा है। ओके, वो देने की तैयारी कर रहा है। अब डिप्लॉयमेंट इज इन प्रोग्रेस, अब वो बना रहा है, वो एक डेटा लेक बना रहा है, बना के मुझे देगा अभी। ओके, डिप्लॉयमेंट इज इन प्रोग्रेस, इट मींस Azure is trying to deploy that data lake for me so that I can use it. ओके, अब देखो दो चीजें मैं यूज कर रहा हूँ बार बार। ओके, डेटा फैक्ट्री और डेटा लेक, और मैंने अभी तक इसके बारे में बताया नहीं आपको। ओके, डेटा फैक्ट्री इज एन ETL टूल। डेटा फैक्ट्री is an ETL tool. Okay, data factory is an ETL tool, and storage account, or you can say, let me write in bracket, data lake is a storage
storage place. Okay, in data lake we can store our data. Okay, in data lake we can store our data. We have many things to discuss, बट चूंकि जिसको नहीं पता था और मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया तो मैंने बोला नहीं था, तो ये मैं बोल रहा हूँ कि डेटा फैक्ट्री एक ETL टूल है. ETL टूल मतलब एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड. Arun, हाँ, one thing, yes, this storage account, can we call this as a data warehouse? no, we can't. Okay, so We it's not can't similar call to data warehouse, it's different from No. it. Yes, data warehouse is a different thing. Okay, okay. Let me write here clearly. Data warehouse is a different thing. I will tell you difference between data warehouse, database, data lake. So basically, a storage account is called data lake, right? Yes, this is a different thing than storage account. तो ये हम और डिटेल में पढ़ेंगे ना, मतलब हाँ हाँ पढ़ेंगे. ओके ओके. पढ़ेंगे. So we can call database, right? Or No, we can't even call it as a database. okay. Data lake cannot be said as database. Okay, ये सब बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोग थ्रो कर रहे हैं और यही सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हो और ये बहुत अच्छी बात है कि आपके माइंड में ये आ रही है. ओके, Is data अगर lake like अगर ये क्वेश्चन आ रहा है इसका मतलब है कि आप सोच रहे हो कि क्या डिफरेंस है, तभी तो आप एक आर्किटेक्ट बन पाओगे आगे चल के. अगर डिफरेंस पता रहेगा तो कि कहाँ हम क्या कर सकते हैं और कहाँ हम क्या नहीं कर सकते हैं. अगर डेटाबेस वेयरहाउस में जो कर सकते हैं वो डेटा लेक में नहीं कर सकते, डेटाबेस में जो हम कर सकते हैं वो हम डेटा वेयरहाउस में नहीं कर सकते या डेटा लेक में नहीं कर सकते. तो बहुत अच्छी बात है कि ये सब क्वेश्चन आ गया कमेंट. कोई कुछ बोल रहा था. हाँ, Arun, data lake can be used like a hard disk. yes, it can be. Yes, it can be used. I mean, hard disk is also a storage location. Data lake is also a storage location. Similar to that, we can similar kind we can think of, right? Data lake. Yes. You can think of. Okay, I'll be discussing around this, but someone asked this, but if you have asked this, let me point out here only one important difference. There are many other differences, but I will be highlighting one important difference. In data warehouse, you can only store RDBMS, I mean relational data, right? Tabular Right, data, right. Right. relational data. But here, any kind of data can be stored. This is one of the difference. There are many other differences that I will be discussing. Okay, here any kind of data. I mean relational, video, audio, images, any data can be stored. Like structure, non-structure, same structure, anything. Everything. Here only is structured. हाँ, Okay. yes. Okay, I'll be discussing around all these things. Okay, तो ये जो है मेरा स्टोरेज अकाउंट रेडी हो गया. माइक्रोसॉफ्ट एजोर ने बनाकर मुझे दे दिया, लो अब यूज करो. अब मैं फिर से वो रिसोर्सेज पे जाऊंगा और ये मेरा UI है डेटा लेक का. ओके, ये मेरा UI है डेटा लेक का. ओके, देखो मैंने हायरार्किकल स्पेस नेम स्पेस को इनेबल किया था, तो ये देखो इनेबल दिख रहा है. ओके, एक्सेस टियर हॉट है, डिफॉल्ट एक्सेस टियर. आई विल बी डिस्कसिंग अगेन अराउंड दिस. देयर आर मेनी थिंग टू डिस्कस अराउंड दिस डेटा लेक, बट दिस इज द UI हाउ डेटा लेक लुक्स लाइक. ओके, now I will open it. Okay, so for opening the data lake open करने के लिए we have this data lake storage option here. What I will do, I'll just click here. Okay, ये देखो डेटा लेक खुल गया. ओके, डेटा लेक खुल गया यहाँ पे. ओके, डेटा लेक खुल गया. तो एक जो है मैंने डेटा लेक भी तैयार कर दिया. ओके, मैं फिर से जा रहा हूँ होम पेज पे. मैं यही दो रिसोर्स आज प्रोविजन करूंगा. ओके, और ये आपको भी रेप्लिकेट करना है अपने एंड पे बिफोर कमिंग इन द नेक्स्ट सेशन. ये देखो दो रिसोर्सेज हो गए हैं. अब ये रिसोर्सेज कहाँ गए हैं? ये रिसोर्स ग्रुप के अंदर गए हैं. तो रिसोर्स ग्रुप क्या है? ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग ऑफ रिसोर्सेज. ओके, रिसोर्स ग्रुप की मैं बात कर रहा था यहाँ पे. ओके, create resource group. What is resource group? Resource group, RG, is grouping of resources. Grouping of resources. रिसोर्सेज की ग्रुपिंग है. ओके, रिसोर्सेज की ग्रुपिंग है मतलब मल्टीपल रिसोर्सेज को यहाँ पे इसके अंदर जो है हम
ला सकते हैं जो कि एक रिसोर्स ग्रुप के अंदर हो। ओके, जैसे मेरे लैपटॉप में फोल्डर है, राइट, मेरे लैपटॉप में फोल्डर है, राइट, एक फोल्डर के अंदर जो है मल्टीपल फाइल्स हैं, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं। ओके, क्या कर रहे हैं हम, प्रॉपर मैनेजमेंट कर रहे हैं एक फोल्डर के अंदर जो है, एक फोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइल्स को लाकर हम प्रॉपर मैनेजमेंट कर रहे हैं, राइट। और यहां से हम एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं मेनली, राइट। अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम किस यूजर को एक्सेस देना है, हम इजिली जो है यहाँ से एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं इस फोल्डर के ऊपर। सिमिलरली अगर मुझे इन सारे रिसोर्सेज के ऊपर एक्सेस कंट्रोल करना है जो मेरे इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर है, फॉरम डी4 के अंदर है, तो मैं फॉरम डी4 पे एक्सेस कंट्रोल करूंगा, वो एक्सेस जो है सारे इसके अंदर जो भी रिसोर्सेज है वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो एक प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए यू कैन थिंक ऑफ इट एज ए फोल्डर इनसाइड व्हिच दीज आर फाइल्स, ओके, व्हिच इज यूज्ड फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। Okay, I hope that this is making sense to you. So does that mean we can also have we can have data lake in हाँ, one group, and we can also have something else like bulb storage in somewhere else, right? And then we can yes, use that. we can have multiple data factory in the same resource group, multiple data lake in the same resource group. We can have those kind of things. Okay. Okay, we can use multiple data factory, multiple data lake in the same resource group. But remember one thing, एक रिसोर्स ग्रुप के अंदर नेस्टेड रिसोर्स ग्रुप नहीं बनता, एक रिसोर्स ग्रुप के अंदर दूसरा रिसोर्स ग्रुप नहीं क्रिएट कर सकते। ओके, नेस्टेड रिसोर्स ग्रुप, ये जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ कि एक रिसोर्स ग्रुप के अंदर दूसरा रिसोर्स ग्रुप नहीं क्रिएट कर सकते, एक रिसोर्स ग्रुप के अंदर रिसोर्सेज ही क्रिएट होंगे जो सर्विसेज है। ओके ओके, अब मैं फिर से डेटा लेक को ओपन करता हूँ, मैं डेटा लेक को फिर से ओपन करता हूँ और मैंने डेटा लेक को ओपन कर दिया और कंटेनर एंड डायरेक्टरी, ओके, इसको अब मैं हटाता हूँ यहाँ से, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैंने दो चीज कर दिया, प्रोविजन, दो रिसोर्स प्रोविजन कर दिया। अब मैं डेटा लेक के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ। ओके, कंटेनर एंड डायरेक्टरी, ओके, कंटेनर कंटेनर एंड डायरेक्टरी। ओके, सबसे डेटा लेक के अंदर सबसे पहले कंटेनर बनता है, कंटेनर के अंदर डायरेक्टरी बनता है। ओके, दिखाता हूं मैं आपको, कंटेनर बनाया और डायरेक्टरी के अंदर और भी डायरेक्टरी या फिर फाइल्स हम क्रिएट कर सकते हैं, डायरेक्टरी या फिर फाइल्स हम अपलोड कर सकते हैं। दिखाता हूं मैं आपको, एक कंटेनर मैं बनाता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने कंटेनर पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंटेनर 1। ओके, यहाँ मैं लिखता हूँ कंटेनर 1, एक कंटेनर मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, कंटेनर मैंने बनाया, अब मैं कंटेनर, देखो अभी कंटेनर ऑप्शन आ रहा है, कहीं भी डायरेक्टरी नहीं लिखा हुआ है। जब मैं कंटेनर 1 पे क्लिक करता हूँ फिर देखो डायरेक्टरी का ऑप्शन आता है। ओके, डायरेक्टरी का ऑप्शन आता है। ओके, इसको ऐसे कर देते हैं, कंटेनर बनाएंगे, कंटेनर के अंदर डायरेक्टरी या फिर फाइल जो है कुछ भी डायरेक्टरी बना सकते हैं या फिर फाइल डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना सकते हैं, डायरेक्टरी बनाते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे C1 कंटेनर 1 डायरेक्टरी 1। ओके, कंटेनर 1 डायरेक्टरी 1, ये मेरे कंटेनर कंटेनर 1 में ये पहला डायरेक्टरी मैंने बनाया। ठीक है, उसी तरीके से मैं कोई और डायरेक्टरी बना सकता हूँ, C1 डायरेक्टरी 2। ओके, डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर, डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर, मतलब मैंने फोल्डर बना दिया। ओके, ये देखो फोल्डर बन गया, इसके अंदर मैं फाइल अपलोड कर सकता हूँ। ओके, कोई भी फाइल, कोई भी फाइल, जैसे मैं 100 डे मास्टर प्लान अपलोड करता हूँ, एक वीडियो है ये। ओके, जिन्होंने नहीं देखा मेरे यूट्यूब चैनल को जाकर देख लेना, 100 डे मास्टर प्लान है जो डेटा इंजीनियर के लिए डे बाई डे बाइफर्केशन है, पाइथन का, सीक्वल का, एज्योर का, सारे टॉपिक्स किस किस दिन कवर करने हैं, 100 डेज में कैसे कवर होगा उसका लिखा हुआ। ओके, तो ये मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, देखो ये देखो, ये अपलोड हो गया, राइट, जबकि एक वीडियो था, ये अपलोड हो गया। ओके,
मैं कोई फाइल अपलोड करता हूँ, कोई एक्सेल फाइल, सीएसवी फाइल, कुछ भी, सब अपलोड होगा इस पे फाइल फॉर्मेट की कोई डिपेंडेंसी ही नहीं है। ओके, कोई भी फाइल मैं अपलोड कर सकता हूँ। जैसे मेरा एक इमेज है, ठीक है, इसको मैं अपलोड करता हूँ, इमेज है, देखो ये भी अपलोड हो जाएगा। ओके, ये देखो ये भी अपलोड हो गया। हर चीज जो है अपलोड हो जा रहा है। अब कुछ कुछ चीजें आ रही है यहाँ पे, यहाँ मॉडिफाइड टाइम आ रहा है, यहाँ एक्सेस टीआर आ रहा है, हॉट इनफॉर्ड, इसके बारे में मैं बात करूंगा बाद में। ब्लॉक टाइप, ब्लॉक इसके बारे में बात करूंगा। यहाँ साइज आ रहा है। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। अब जो है यहाँ देखो, ये दूसरा डायरेक्टरी है। ओके, अब यहाँ पे भी मैं कुछ फाइल अगर अपलोड करना चाहूँ, मैं इजिली अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, इट जस्ट डेटा स्टोरेज लोकेशन, यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कंटेनर्स बन गए, ओके, ये डायरेक्टरीज बन गए, राइट। अब मैं और डायरेक्टरी मुझे क्रिएट करना है, मैं क्रिएट कर सकता हूँ। अब मुझे यहीं पे कंटेनर के अंदर ही अगर फाइल अपलोड करना है, ये कंटेनर है, राइट, यहाँ से हम कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं। कंटेनर के अंदर ही फाइल क्रिएट कर अपलोड करना है तो मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, जस्ट कंटेनर के अंदर, जैसे कि ये वाला मैं अपलोड कर रहा हूँ। ओके, ओके, अपलोड हो गया। तो डेट्स व्हाट हियर आई एम राइटिंग कि सबसे पहले कंटेनर, कंटेनर के बाद या तो डायरेक्टरी बनाओ या फिर डायरेक्टली फाइल्स को अपलोड कर दो। नहीं तो अगर चाहो तो डायरेक्टरी के अंदर भी आप फाइल को अपलोड कर सकते हो। अब जो अगला क्वेश्चन आता है कि डायरेक्टरी और कंटेनर और डायरेक्टरी में क्या डिफरेंस है। ओके, तो डायरेक्टरी और कंटेनर में वही, कंटेनर और डायरेक्टरी में वही डिफरेंस है जो कि ड्राइव और फोल्डर में है। ओके, जो कि ड्राइव और फोल्डर में है। ये जो ड्राइव्स हैं, इन ड्राइव्स के अंदर फोल्डर्स हैं, राइट। तो फॉर प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल, ओके, फॉर प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल मल्टीपल ड्राइव्स हमने क्रिएट किए हुए हैं, राइट। इसमें एक सिस्टम फाइल्स होंगे, इसमें जो है मेरा कुछ पर्सनल फाइल्स होगा, इसमें जो है मेरा कुछ ऑफिस का डेटा होगा। तो इस तरीके से मैंने ड्राइव्स क्रिएट करके प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए रख दिया है। ओके, मैं चाहूँ तो किसी को इस पे एक्सेस दे सकता हूँ और इन 3 ड्राइव पे एक्सेस ब्लॉक कर दूं, इस एक ड्राइव पे एक्सेस देके इन 3 ड्राइव पे एक्सेस ब्लॉक कर दूं। सेम थिंग हियर इज विद कंटेनर इन डायरेक्टरी। ओके, एक डायरेक्टरी हम बना सकते हैं, मान लो कि हमारा डेटा इंजीनियरिंग और डेटा एनालिस्ट टीम साथ में काम कर रहा है, तो एक हम कंटेनर बना सकते हैं। ये कंटेनर जो है डी का कंटेनर है, इसमें सिर्फ डेटा इंजीनियर वाले जो टीम के लोग हैं, सिर्फ वही लोग डेटा रखेंगे, उन्हीं का डेटा अपलोड होगा। ठीक है, तो डी कंटेनर मैंने बना दिया। एक डी कंटेनर बना देते हैं कि उसमें सिर्फ जो है डेटा एनालिस्ट ही जो है उस पर डेटा डालेंगे। ओके, और मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा एक्सेस कंट्रोल करूंगा कि डेटा इंजीनियर जो है सिर्फ डी कंटेनर को देख पाएंगे और डेटा एनालिस्ट जो है वो डी कंटेनर के डेटा को देख पाएंगे। ठीक है, अब जैसे डी डी कंटेनर में मैं डेटा इंजीनियर हूँ तो मुझे इस कंटेनर पे एक्सेस मिला, तो मुझे ये सब नहीं, ये सब मैं नहीं खोल पाऊंगा। तो मैं इसमें जाऊंगा। अब इसमें प्रॉपर डेटा मैनेजमेंट के लिए मैं क्या करूंगा, डायरेक्टरी बनाना चालू करूंगा। ठीक है, कि इसके अंदर मेरा सेल्स डेटा है, एक फुल डायरेक्टरी मैंने बनाया है, इसके अंदर मेरा सेल्स डेटा है। ओके, एक डायरेक्टरी मैंने बनाया है, इसमें अंदर जो है मेरा फाइनेंशियल डेटा है। ओके, एक डायरेक्टरी मैंने बनाया, इसके अंदर मेरा फाइनेंशियल डेटा है। ओके, तो मल्टीपल जो है मैं डायरेक्टरी बनाकर, डायरेक्टरी और यू कैन से फोल्डर, ओके, बना के मैं जो है अपने डेटा को प्रॉपरली यहाँ पे रख सकता हूँ। आई होप दैट दीज थिंग्स आर मेकिंग सेंस टू यू। ये समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। Yes. ओके, ओके, तो ये था एक डेटा लेक का इंट्रो। मैं फिर से डेटाबेस की तरफ जाऊंगा, सॉरी डेटा फैक्ट्री की तरफ जाऊंगा और मैं यहाँ पे कुछ और बात करूंगा। आपको कल सेशन में आने से पहले आप प्लीज इस पे जो है रजिस्टर कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, ताकि जो मैं पाइपलाइन बनाऊं वो आप रेप्लिकेट करो अपनी एंड पे। ये डेटा फैक्ट्री का यूआई ही है, मैंने आपको बताया। ये पहला ऑप्शन जो है ये है होम। ओके, ये जो दिख रहा है पेज आपको, ये होम पेज ही दिख रहा है। इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जैसे कि इन्वेस्ट, ऑर्केस्ट्रेट, ट्रांसफॉर्म डेटा, कॉन्फ़िगर एसआईएस, एसएसआईएस। ओके, ये सारे ऑप्शंस आपको इस ऑथर वाले में मिल जाते हैं। ओके, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। अगर आपको नया पाइपलाइन बनाना है तो उसके लिए आपके पास ये पाइपलाइंस ऑप्शन है। इसके अंदर समथिंग कॉल्ड चेंज डेटा कैप्चर, अगेन आई विल बी डीलिंग विद इट। फिर है हमारे पास डेटा सेट्स, ओके। फिर है हमारे पास डेटा फ्लो, ओके। ये सब हम डील करेंगे। फिर है पावर क्वेरी, पावर क्वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम ये 4 को डील करेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारे पास मॉनिटर सेक्शन। यहाँ पे हम पाइपलाइंस को मॉनिटर करते हैं। जो भी पाइपलाइन रन होता है, वो पाइपलाइन फेल कर गया, सक्सेस कर गया, या फिर फेल किया तो क्यों फेल किया, उसका एरर देखना है, तो हम इस मॉनिटर सेक्शन में आते हैं, ओके। फिर आता है हमारे पास ये मैनेज सेक्शन। यहाँ पे हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। क्या क्या इंफॉर्मेशन देख सकते हैं वो हम बात करेंगे। अ, अभी जो है आपको नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे करके आएगा। फिर एक है लर्निंग सेंटर। यहाँ पे अगर आपको लर्निंग कुछ मटेरियल चाहिए तो यहाँ पर जो है ये 5th ऑप्शन है। ये जो डेटा फैक्ट्री का लर्निंग मटेरियल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ओके। अब जो है हम फिर से इस ऑथर ऑप्शन पे चलते हैं, ओके। और डेटा फैक्ट्री, डेटा फैक्ट्री, सर सॉरी, हेलो हाँ हाँ, आप कुछ बोल रहे थे, कौन है? सर। हाँ सर, और डायरेक्टरी का जो आपने बोला ना, पर्टिकुलर एक्सेस हाँ, कैसे देंगे किसी यूजर को? ओके। उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, उसके अंदर हम बाद में बात करेंगे धीरे धीरे करके। वैसे जैसे आपने अगर पूछ दिया है अभी, तो मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा एक व्यू दे देता हूँ कि कहाँ से कंट्रोल होता है, ठीक है। ये दिख रहा है, मैनेज एसीएल, एक्सेस कंट्रोल यस लिस्ट, यहाँ से कंट्रोल यस होगा। ओके दिख रहा है, रीड राइट एग्जीक्यूट, यस सर। ओके, होना यहाँ से कंट्रोल, ठीक है। तो हम फिर से जो डेटा फैक्ट्री पे आते हैं, और मैंने ये पांचों ऑप्शन जो है आपको अभी दिखाया। अभी मैं आज कुछ किक स्टार्ट नहीं करूंगा, क्योंकि फिर जो है वो फंस जाएगा। तो आज जो है हम लोग अपने सेशन को यहीं पे होल्ड करते हैं, और फिर जो है कल से हम जो है अपना फर्स्ट पाइपलाइन किक ऑफ करेंगे, ओके। और फिर हम जो है अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। मैं अपना फॉरम ओपन करता हूँ, अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप बताओ, कुछ बात करना चाहते हो मुझसे। So once we create this account, Azure account, so can we have multiple subscription, or is it required, or only one is enough? नहीं नहीं, एक बार आप लोगे एक क्रेडिट कार्ड से, that will be there with you for 1 month. After 1 month you will have to again take subscription. Okay. ओके, ये ऑटोमेटिकली सब खत्म हो जाएगा 1 मंथ के बाद। मतलब आप रन नहीं कर पाओगे कुछ भी पुराने सब्सक्रिप्शन पे। Arun, one thing. So हाँ, suppose मैंने एक अकाउंट में कुछ पाइपलाइंस बनाई है, राइट? तो आफ्टर 1 मंथ वो वो सिर्फ अकाउंट मेरा क्लोज हो जाएगा, तो कैन वी ट्रांसफर पाइपलाइन दैट रहेगा, पाइपलाइंस? पाइपलाइन रहेगा, बट यू वॉन्ट बी एबल टू रन। तो उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते दूसरे अकाउंट में अपन मर्ज? ट्रांसफर कर सकते हैं, बट जो आप कनेक्शन बिल्ड किए रहोगे, जैसे डेटा फैक्ट्री से डेटा लेक का, वो कनेक्शन वहां पे वर्क नहीं करेगा, समझ रहे हो? क्योंकि वहां तो अब डेटा लेक चेंज हो गया ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो कनेक्शंस बंद हो जाएंगे, बाकी आपका पाइपलाइन मूव कर सकता है। ओके, सो मतलब बेसिकली दूसरा जब अकाउंट बनाएंगे तो वो एक दूसरे सर्वर पे क्रिएट होगा, तो जो कनेक्शन ने पहले बनाए थे वो दूसरे सर्वर पे वो हाँ, न्यू कनेक्शन काम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। ओके वो ओके वो चेंजेस करने पड़ेंगे फिर आपको। वैसे आपको मैनुअली। हाँ, मैनुअली करना पड़ेगा। वैसे आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पाइपलाइंस को, क्योंकि हर टाइम तो हम कुछ नया नया सीखते रहेंगे, है ना। तो आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप रन थोड़ी करोगे एक पाइपलाइन जो आज बनाया उसको 2 महीने बाद आप रन नहीं करोगे, राइट। आप सीख गए, दैट्स ओवर। लेकिन वो पाइपलाइन वहां पे दिखेगा, आप जब भी लॉग इन करोगे आप देख पाओगे, लेकिन रन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका जो है वो सब्सक्रिप्शन ओवर हो चुका है। वो आपको बोलेगा कि पे ले लो, तब चलेगा ये। तो आप चाहो तो आप पे में जा सकते हो। फ्री सेटअप में भी सब्सक्रिप्शन मैंडेट, सॉरी, फ्री सेटअप में भी सब्सक्रिप्शन मैंडेट है? हाँ, फ्री सेटअप में सब्सक्रिप्शन मैंडेटरी है, दैट इज फ्री ईमेल आईडी सर सब्सक्रिप्शन। एक ही रहेगा ना? ईमेल आईडी बहुत आप चेंज करके क्रिएट करना सब्सक्रिप्शन।
मतलब हर बार क्रेडिट नया कार्ड, लगेगा? हाँ क्रेडिट कार्ड भी चेंज कर देना। वैसे कुछ लोगों ने मुझे बोला है कि सेम ईमेल आईडी से भी क्रिएट हो गया है, तो मैं शुरू में जब करता था, क्रिएट करता था, तो नहीं हुआ था, ठीक है, लेकिन अब तो मैं बहुत दिनों से पेड यूज कर रहा हूँ। लेकिन और कुछ लोग अदरवाइज बोलते हैं कि सेम ईमेल आईडी से भी हो गया है। सर इसमें अभी एसक्यूएल और पाइथन की जरूरत कब से पड़ेगी, क्योंकि अभी उसके बारे में टेंशन है मुझे। एसक्यूएल आपको कैचअप करने में टाइम नहीं लगेगा, एसक्यूएल 20 दिन में हो जाएगा आपका, अगर आप पढ़ोगे ठीक से। एसक्यूएल के बिना तो आप पूरे डेटा की दुनिया में कदम ही नहीं रख सकते, एसक्यूएल आपको नहीं सीखना सर, पड़ेगा। इसीलिए वही पूछ रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरा बैकग्राउंड ही मैकेनिकल है, इस वजह से अच्छा मुझे अच्छा, नहीं आप, हाँ हाँ आप सीख जाओगे। आप एडमिन से कनेक्ट करना या फिर क्लास के बाद मुझसे कनेक्ट करना, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको गाइड तो सर करूंगा। हेल्प करवा दीजिए प्लीज। हाँ सर हाँ हेल्प क्लास के बाद रहना सर आप। अच्छा बात करना है आपको? यस सर, मुझे भी थोड़ा करना है। अच्छा मुझे भी अच्छा, सर इसी में डाउट है SQL 2 में। मिनट 2-3 मिनट दे दीजिए। हाँ ठीक ठीक ठीक। तो क्या पर्सन 1-to-1 करना चाहते हैं आप लोग बात? नहीं सर, ऐसे नॉर्मल ऐसे। अच्छा मैं नहीं सर, अभी रिकॉर्डिंग ऐसा बंद कर कुछ देता हूँ, नहीं। अगर आप कुछ बोलना चाहो तो बोल सकते हो।